Thank you, sir. Good afternoon, everyone. So today's discussion will be on the topic of returns. What is the returns which we will file? There is some question which is received. I'll answer those first, and then because I think these questions were pending even in the previous session. Under section 61, an authority or board or any other body, that is the TDS, establishment by government. So your government will include local authority. Local authority is separately given, right? So local authority also will be included under section 51. Process is firstly CPIN is generated. So the next question is process is firstly CPIN is generated, then mandate form will be obtained and given to the authorized bank who will issue CPN. Correct. So what is the use of BRN? So internal bank reference number, so that which bank it goes, the RBI has to have that control. That's why BRN is useful to reconcile the receipts and payments with the individual banks with the RBI. सर आईटीसी एंड पेमेंट ऑफ टैक्स के बीच के चैप्टर्स की पीपीटी अभी तक अपलोड नहीं हुई है, प्लीज अपलोड. ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने भेज दिया है. देयर इज सम टेक्निकल इशू, तो वो बोर्ड ऑफ स्टडीज को भेज दिया, दे विल अपलोड इट. Explain amendment on page 14.33. Okay, we'll go to that. And sir wants explanation in Hindi. Okay. Amendment White Finance Act 2024, that is yeah, the determination of amount. I'll just share this. Yeah. The determination of the amount in default under this section shall be made in the manner specified in 73 or 74. Now it is amended to include 74A, because as we are aware, 73 and 74 are the provisions to recover any amount. If there's any short payment, या जैसे किसी का short payment है, ठीक है, TDS short payment किया है, tax भी short payment किया, कुछ भी हो, तब क्या करते हैं, ऑफिसर के पास पावर होना चाहिए रिकवर करने के लिए जो भी शॉर्टेज है. वो पावर किस में है? वो पावर है सेक्शन 73 और सेक्शन 74, सिर्फ दो ही सेक्शन में है. लेकिन एक्ट में क्या चेंज हुआ है, ये बोल दिया गया है कि 73 और 74 जो दो रिकवरी के सेक्शंस होते हैं या डिमांड टैक्स डिमांड करने के सेक्शंस होते हैं, वो सिर्फ 23 24 तक की है. 2024 1 अप्रैल 2024 से नया प्रोविजन आ गया है 74A. तो जो भी अमाउंट इन डिफॉल्ट रहेगा अंडर टीडीएस up to 23-24, it will be recovered through 73 and 74. और 1 अप्रैल 2024 से वो रिकवरी के लिए पावर कहां से आ जाएगा? वो पावर आएगा सेक्शन 74A से. So that is the amendment which is being spoken of over here. Clear, Chauhan? So transfer of amount reflected in electronic credit ledger, is that still exists in the credit side but not debited? Not understood your question. So TCS rate for CGST, SGST 1%, and for IGST also 1%. Nahi. CGST 1%, SGST 1% makes it 2%, and not TCS, TDS, Baba. TDS rate is 1%, 1% makes it 2%, and IGST rate is 2%. करेक्ट. सो सिर्फ 73 और 73 के बदले 74 हो जाएगा. करेक्ट. 73, 74 एंड 74A, क्योंकि सेक्शन तो सेम ही है पूरे साल के लिए, बिफोर अमेंडमेंट और आफ्टर अमेंडमेंट. तो जब बिफोर अमेंडमेंट है तब उसे आप 73 और 74 रेलेवेंट हो जाएगा, और अमेंडमेंट के बाद 74A अमेंड हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा. 14.3 में क्या क्वेरी है?
निधि, क्योंकि 14.3 is talking so many things. Value of supply is under a contract. Sir, if invoices includes amounts of two contracts, then we will consider limit of 2.5 lakhs or both contracts combined. So for each contract, you have to see if for each contract it crosses 2.5 lakhs, then you will have to, not based on invoices. If you give multiple invoices, but the contract is one, right? You're splitting the invoices so that you should not be deducting TDS. That will not be considered as valid. If the contract is about 2.5 lakhs, then TDS has to be deducted. यहाँ पे ये तो रैपिड फायर क्विज है, तो ये आपको सोच के देना पड़ेगा। इसका आंसर्स हम अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, सॉरी निधि। ऑल्सो transfer of amount from electronic cash ledger from one head to another, then that amount can also be shifted. That still exists in credit side of that head and not debited. See, your cash ledger is the amount what you deposit to the government. Once you deposit it, it will be in the credit of the cash ledger. Correct? Now, if you will remit the tax to the government through filing of returns or paying to the government, then it gets debited. Once it is debited from the electronic cash ledger, you cannot do anything. Okay. So whatever amount is lying in the credit side of the electronic cash ledger, that only that you can move from one head to another head. But what is debited already, that you cannot touch because you yourself have debited it. Correct? The government is not debited it. You have the authorization to debit it. So once you debit it, then you can't bring it back. It is gone to the government. TCS rate for intrastate will be 0.25 plus 0.25, correct? CGST and SGST will not be totally 0.25. It is 0.25 CGST plus 0.25 SGST. And for IGST, it will be 0.5%. 0.25 plus 0.25 makes it 0.5%. So when you do an intrastate, it is 0.25 plus 0.25. And if you do interstate, it is 0.5. Because then there is no bifurcation, right? That's why when it is interstate, it is 0.5%. Sir, contract of 2.5 lakhs is to be seen for every contract or whole year. So it's to be seen for every contract. Once one contract crosses, then all subsequent payment, everything TDS has to be deducted. So once the party is under the net of the TDS, all transactions, TDS has to be deducted. Thirteen point four nine and 13. अच्छा इसमें भी amendment है. In this amendment also, I'll show you this screen. The other amendment is with respect to payment of tax. ये जो amendment है, यहाँ पे बोलता है कि सेल्फ असेस टैक्स सेम, यहाँ पे ये भी सेम ही है कि 49 सबसेक्शन 8 जो पहले बोलता था कि every taxable person shall discharge his tax and other dues under this act are the rules made thereunder in the following order. So पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट सेल्फ असेस टैक्स फॉर दिस मंथ, फॉर प्रीवियस मंथ, फिर इस मंथ, उसके बाद जो भी डिमांड रहता है उस पे पे करना पड़ता है. पहले सिर्फ 73 74 था, अभी 74A इंक्लूड किया. वैसे ही सेक्शन 50 में भी 74A इंक्लूड किया गया है. सो वेयर एवर यू सी द provisions of the act which gives the power to recover tax under 73 or 74, those provisions have all been amended to include 74A in it. That is the
only amendment year. TCS is given as 1%. No, let me show you. Which book are you referring? See, the TCS rate is 0.25% and 0.25%, which is 0.1%. I think you're referring a old material. Please check that. Amendments का मतलब, amendments means change in act. Yes, जो भी changes in act budget होता है, या फिर इन केस जनरली बजट में होता है कि एक्ट में कुछ चेंजेस करना पड़ता है, जब वो चेंजेस डिस्कस होता है और पास हो जाता है उसे कहते हैं अमेंडमेंट. यस, एवरी ईयर होता है. इसमें भी 73 74 के बदले 74 है. करेक्ट, दैट्स द ओनली चेंज. Correct. Yes, if the first supply is 2 lakh, second is for contract of 3 lakhs, and third is for 1 lakh, TDS will be deducted for the second and third. TCS means tax collected at source, but mathematically it's reduced and deducted. You're right. Correct. Unjust enrichment. Unjust enrichment means where you want to get a refund. Okay. Now you are eligible for refund because you do export. Now, whatever imports you have, on that you have GST, which is paid by your vendors. Now you're claiming a refund of this. So the government will give you a refund. But what you do is in your export invoice also, you collect from your customer. And then you ask for refund also. That is unfair, right? So that is the meaning of unjust. When you are getting the benefit from your customer already, then you cannot get the benefit from the government. That is what is the concept of unjust enrichment. You cannot get the benefit or you cannot get enriched by two people. If you're getting the money from your customer, then don't ask refund from the government. If you're not getting money from the customer, you're not recovering it from your customer, only then you can get the refund, because there you're not unjustly enriched. You're not collecting extra money from the customer also. You're only asking the government to give you. That is the concept of unjust enrichment. Question number 5, Asta's question is, will he get the refund? Examine the relevant provisions of towards payment of tax and compliance with the tax. Okay, at the time of filing 3B for a particular month, he noticed there is no sufficient amount under the minor head tax towards payment of 30,000. When approached with the consultant, Mr. A was guided to deposit the tax amount under proper head of account and claim a refund. So now you should say that this is not required, that you pay the amount and claim a refund. Since it is sitting in your cash ledger, you can transfer from the interest column to the tax column. Okay, you can do that. If you deduct excess TDS and deposit to the government more than who will get the refund. So if you have to deposit 1%, but you have deposit 2%, then your work you have done extra, you cannot claim a refund, because once you have deducted TDS and deposited to the government, you will have to give the credit benefit to the supplier. Now the supplier will get a refund of it, or he will adjust that amount with his output tax payable. Okay. So once you have given it to the government, then you cannot get a refund, because you have to give that much of credit to your customer. Can we get refund of interest etc. lying unutilized? If it is there in the cash ledger, then you can get.
But in your credit ledger, you cannot get. If it is any refund of interest amount which is there in your columns, that you can get it. Yes. Okay. I think that is good enough. Good preparation in terms of the questions. Lot of work has gone in. So once we are done with our routine, now let's get into the today's topic, which is returns. मतलब जो returns file करना पड़ेगा, उसके बारे में we'll discuss. So what we have done bought a chocolate, bought a sweet box, bought a uh, cake last time, of course, with one piece away, but that in the TCS you got one piece extra also, correct? So आपको सब कुछ मिल गया है. Now it is time for you to file your GST returns. So whatever transactions you have done, you have to report it to the government. How do you report it? Because you will do daily sales, right? And you will do daily collections, daily payments. A lot of invoices will come for you, and a lot of payments. You will raise some invoices. So, how will the government know saying what is the tax which you have to pay? So, we have, as I said, you which is the powerful section under the GST. You remember we had discussed in the last to last session, which is the powerful section under the GST. Good, good response. Section 59, which is self assessment. Correct? Very good. I'm glad you all remember that. Section 59, self assessment. Not 39, 59 on self assessment. So it's such a powerful section that you will decide what is the value and what is the rate, and then you will file your returns. What will be the end result of that self assessment? That you will do the self assessment of your transactions and you will report it in the GST returns. Okay. So that returns is your assessment, which you will do. And based on your information, the government will get the revenue. And later on, if they get any questions or if they have any queries, they will follow the procedure of assessment, audit, scrutiny, other things. Okay. But all of that is basis your returns. So your returns is very important. That's why we're saying that self-assessment is a very powerful section. Now, what are these returns and why is it important? Returns are information which taxpayers gives to the department for the taxation for the transaction which has taken place during a given period. Now, different type of returns are there for different categories of people. For regular category of people, there are different returns. For a non-resident taxable person, different return. For a composition, different. UIN, different. Each category of person will have different returns. Returns should provide the facts because it is not a kind of a opinion that you will say, okay, I'm supposed to pay this, I'm paying some amount. No, it has to mention the exact facts. How much is the sales you have made? What is the invoice number you have used? What are the purchases you have made? What are the value of supplies on which you have to pay reverse charge? So they are all factual information. The returns should have facts. And there is a specific format. Returns में ऐसा नहीं कि ठीक है, each company will follow different format. No, you can have different systems internally, different accounting softwares, but the data will go to the GST portal in one specified format itself. Okay. What are the purpose of the returns? Very simple mode of transfer of information. That is, whatever you're doing, you have to inform the government. Second is a compliance verification program. Like many companies want to be compliant. So this is the first tool in that compliance that your data will become compliant. Your filing of returns means that, yes, you are a compliant person. Finalization of tax liabilities. Your tax liabilities gets finalized that, yes, it will be scrutinized and checked that, yes, okay, based on my self-assessment, I'm giving my returns. So my liability is finalized. Then providing necessary inputs for taking policy decisions. For whom? For the government. So government will, based on our inputs, take our information and make some policy decisions.
Then management of audit and anti-evasion programs of tax administration, which means that whatever transactions we take care of, it provides a tool or provides information to the government, like how they take policy decisions, like that itself, based on various information what is being provided. Suppose you are a company in one industry, you are providing your data, then another company in your same industry is providing his data. They will do analysis saying that what is the quantum of purchases which this person does in this industry and what is the purchases done by the other person. Okay, so there will be a comparison, and based on that, they will be able to analyze, okay, should we, is there any anti evasion? Anti evasion means tax ki chori. Evasion is robbery of tax. So if there is any evasion which is happening, then the anti-evasion team of the department will scrutinize further and ask queries to that person. So this is the advantage of the returns. You are also being compliant, and with this information, government also will get a proper revenue and information. Now, what are the types of returns? The types of returns for a normal taxpayer is GSTR1. In this GSTR1, what do we file? We file the details of our outward supplies. So whatever sales we are doing, okay, on which we are charging GST, or we are not even charging GST. When do we not charge GST? सभी सेल्स के ऊपर जीएसटी तो लगेगा ना. But why am I saying that on some transactions GST is not charged? Can you give me some example? Correct. Exempt supplies, zero rated supplies, supply of petroleum. Yeah, petroleum gas and five petroleum products and alcoholic liquor for human consumption. Schedule 3 supply. Very good. Very good. So these are all the categories of supplies which there is a supply, but there is no tax component in them. Good. So all those supplies also, even though there is a tax component or not tax component, it is a outward supply for you. कि आप supply बाहर की तरफ कर रहे हो. You are selling something. All of that has to be reported in the GSTR1. तो GSTR1 में आप कुछ भी टैक्स पे नहीं कर रहे हो. You're only giving a disclosure of whatever sales you have made. ठीक है? Why it is important? क्योंकि from GSTR1 will you will mention the invoice number and the customer's GST number. So once we mention the customer's GST number, it will get transmitted to the customer's register called as GSTR-2B, and then he can claim the credit. If you do not file GSTR1, then the GSTR-2B credit cannot be claimed by the customer. So 1 is important for the customer to claim the credit. Furnishing of details under section 39. Section 39 says that you have to file a return. Now, this is a proper return called as GSTR-3B. This is the return which is the actual return. Whatever GSTR-1 you mentioned, this is actually not a return. It's only a providing details of outward supply. Some from whatever total you have here should come here in your GSTR-3B. Because whatever is your supplies, on that you will pay GST, so that will come here. If it is exempted, you will not pay the tax. If it is taxable, you will pay the tax. So that values will come here. But fully only that will come? No. From that, we have to reduce our input tax credit. So we'll reduce the input tax credit and show it in our GSTR-3B. Right? After GSTR-3B, this is for regular taxpayers. As we said, special returns for special category of people. For composition taxpayer, we have to file GSTR-4.
and a non-resident taxable person will file GSTR 5. Then there are other returns. We'll discuss this in detail. There is something called as first return. Then there is a final return. इसके बीच में there is a return for TDS and TCS providers. Statement GSTR 7 is for TDS, GSTR 8 is for TCS, 7 is for TDS. And annual returns in GSTR 9, 9A, 9B, and UIN holders, they have a separate return called GSTR 11. Flow in GSTR 1, 2B, 3B हम दिखाएंगे आपको. We'll just show you that. Okay. The good thing is, whatever returns, all the returns under GST are to be filed electronically only. आपको कुछ manually बनाने की जरूरत नहीं है. All the returns has to be filed electronically on the portal called gst.gov.in. So final return 3B or 3A? 3A तो कुछ है ही नहीं ना यहाँ पे. Final return is 3B only. There's nothing called 3A return. Okay. Why is it important to file the returns on time? कि आप सोचोगे कि returns file करना है, मैं late file करूंगा तो क्या होगा? There are two things. One is taxpayer is required to estimate his tax liability on a self-assessment basis and deposit the tax. So return is therefore a working sheet for the authority to rely on. क्योंकि उन्हें self assessment बोल दिया है और आप returns file नहीं करोगे तो फिर self assessment हटा देंगे. Correct? That's why you have to file the return on a timely basis so that they know that yes, what self assessment we have imposed is being followed correctly. Right? And it also has a bearing on the person, as I had said that whatever one we file will give a credit to the customer. So that's why one filing is important so that customer can also claim the credit. Otherwise, he will not be in a position to claim the credit. GST returns needs to be filed online, as we had said, on the portal ही है, online है. Portal का नाम है gst.gov.in. This is the portal for filing all the GST returns. It can be uploaded through offline utilities, which is provided by GSTN. आप GST login करेंगे आपके user ID और password लेके. If you log into the gst.gov.in, you will get a user ID and password once you register. उसके बाद आप लॉग करोगे और GSTR फाइल करोगे. ठीक है. उसके पहले एक ऑप्शन आता है एनी काइंड ऑफ टूल्स रिक्वायर्ड. उसमें क्या होता है, देयर इज अ ऑफलाइन यूटिलिटी टूल. मतलब इट्स लाइक एन एक्सेल जिसमें आप बहुत सारा डेटा हो तो आपके सॉफ्टवेयर से आप एक्सेल में डाल सकते हो. ठीक है. आप एक बार एक्सेल में डाल दोगे, देन व्हाट हैपेंस कि उससे आपका रिटर्न फाइलिंग बिकम्स इजियर. कि आपको एक एक की इन नहीं करना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल में. आपका डेटा जो भी है उसको आप इस ऑफलाइन यूटिलिटी में डाल दीजिए. ये ऑफलाइन यूटिलिटी फॉर फ्री ऑफ चार्ज है और ये किसने दिया है? जीएसटीआई ने सभी टैक्स पेयर्स के लिए दिया है. ठीक है. अगर वहां पे आप फाइल कर देते हो सो देन इट्स गुड. इफ यू आर नॉट एबल टू फाइल इट, then there are some special agencies called as GST Suvidha providers. What do these GST Suvidha providers do? They give you a connection link between the GST portal and your software. आपके सॉफ्टवेयर है या उनका सॉफ्टवेयर भी हो सकता है. जीएसपी सॉफ्टवेयर जो आपके डेटा टैली से लेके फिर उसको प्रोसेसिंग करके जीएसटीआर पोर्टल में फाइल करेगा. सो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स आर people who kind of assist us in filing our returns in a faster manner. The information furnished in the returns are stored on the common portal and it will be same for the center and state. जो भी आप डेटा फाइल करते हो रिटर्न्स में वो कॉमन पोर्टल में स्टोर हो जाएगा और वो इंफॉर्मेशन स्टेट अथॉरिटीज और सेंट्रल अथॉरिटीज, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों है, दोनों को इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए. तो ये दोनों इंफॉर्मेशन स्टेट जीएसटी अथॉरिटीज और सेंट्रल जीएसटी अथॉरिटीज को मिल जाएगा. अगर सेल्फ असेसमेंट ना तो कोई नुकसान होगा? हाँ, क्योंकि अगर आप सेल्फ असेसमेंट ठीक से नहीं करेंगे और आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया तो फिर नुकसान आप ही का है. और ऑपोजिट साइड आपने सेल्फ असेसमेंट करके कम टैक्स पे किया तो फिर गवर्नमेंट को नुकसान है.
Either ways, one of them will lose. तो आपको देख के करेक्ट करना पड़ेगा. जीएसपी फ्री होता है, नहीं, जीएसपी फ्री नहीं होता है. वो ऑफलाइन यूटिलिटी जो हमने बताया था सेकेंड पॉइंट में, वो फ्री है. लेकिन जीएसपी का सर्विसेज लेना इज नॉट फ्री. जीएसपी विल चार्ज सम अमाउंट फ्रॉम यू. Information furnished in the returns are stored on common portal and it will be the same for center and the state. Now, what is this GSTR1? So, जैसे हमने इतने सारे रिटर्न्स बताए थे, एक एक रिटर्न का मतलब जानेंगे. What is the difference between gst.gov.in and common portal? So gst.gov.in itself is a common portal. So what we refer to as common portal is this portal itself. There is no separate common portal. When we say common portal, why is it called common? Because in this portal only you have to apply for registration, file your returns, make the payments, file any appeals, etc. That's why it's called as a common portal. So this statement of outward supply in GSTR1 is filed under section 37 and rule 59. Here it is only furnishing of outward supplies जिसमें GSTR1A, और यहाँ से जो भी आप सेल्स फाइल करोगे उसको आपको GSTR3B में पेमेंट करना पड़ेगा. लेकिन रिसिपिएंट को क्रेडिट कैसे मिलेगा? आपके GSTR1 फाइल करने पे आप फाइल करोगे तो सामने वाले के अकाउंट में दिख जाएगा. जैसे मैं आपको कुछ ट्रांसफर करता हूँ गूगल पे से, राइट? तो व्हेन आई ट्रांसफर इट टू यू, मेरे पास रिसिप्ट है. सो दिस इज लाइक माई GSTR1 और आपको मिल जाएगा आपके गूगल पे में. सो दैट इज लाइक योर GSTR2B कि मैं पे फाइल करते ही आपको दिख जाएगा. सेम जैसे ट्रांसफर करते हैं वैसे ही जीएस डेटा इसमें है. इसमें अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं लेकिन डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं. इनवॉइस नंबर, इनवॉइस वैल्यू, टैक्स अमाउंट, सीजीएसटी है या एसजीएसटी है, ये सभी हम ट्रांसफर कर रहे हैं. इसे कहते हैं या रिटर्न्स. तो ठीक है, जो मैं फाइल करूंगा वो आपको दिख जाएगा. दिस इज द GSTR1. ठीक है. हाँ, मंथ के लिए होता है और क्वार्टरली जो फाइल करते हैं उनके लिए क्वार्टर का होगा, वरना ये जनरली मंथली करना पड़ता है. क्वार्टरली कौन फाइल करता है? सो ऑप्शन होता है कि जिसके टर्नओवर कम है वो क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं. ठीक है. ओके. तो GSTR1 कब फाइल करेंगे? बाय द 10th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ. एंड द लॉ में जो लिखा है 10th है, लेकिन एक्चुअल डेट 11th है. वाई? बिकॉज द लॉ सेज द कमिश्नर
can extend the due date of filing GSTR1. So the Act says the return has to be filed by 10th, and the power is given to the commissioner to extend it. Now the commissioner has used the power and he's extended the due date of filing GSTR1 for everybody to the 11th. So he's extended date from 10th to 11th. अब 11th को आप फाइल करेंगे GSTR1 if your turnover is more than 5 crores. अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है तब आपको कंपल्सरली मंथली ही फाइल करना पड़ेगा. लेकिन 5 करोड़ के नीचे है देन यू हैव ऑप्शन टू फाइल इट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस. ठीक है. इफ यू वांट लेस देन 5 करोड़ 10 टर्नओवर है, आप मंथली फाइल करना चाहते हो तो मंथली कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. बट आपको ऑप्शन दिया गया कि आप छोटे टर्नओवर वाले हो, यू विल नॉट हैव वेरी मच इंटरेस्ट इन फाइलिंग द रिटर्न्स वगैरह, तो फिर आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हो. ठीक है. सो दिस QRMP स्टैंड्स फॉर क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट. तो आपका टीओ मतलब टर्नओवर है. अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है तो आपको मंथली फाइल करना है, लेस देन 5 करोड़ है तो फिर आपको ऑप्शनल है. ठीक है. GSTR1 everybody has to file excluding the following people. Now QRMP, क्या some questions? OIDR क्या होता है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस. वो आपके सिलेबस में नहीं है, बस ये जान लीजिए कि जब OIDR सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको भी GSTR1 लागू नहीं है. मंथली 11th, क्वार्टरली 13th. करेक्ट. क्वार्टर की डेट है 13. बट सर क्वार्टर फाइल करने से कस्टमर को प्रॉब्लम होगा ना? हाँ होगा. इसीलिए ये एग्जैक्टली यश कोडार ये एक ऑप्शन है कि कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. QRMP का मतलब है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट. 13th क्या है? 13th ड्यू डेट है भाई, कि अगर आप क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करते हो तो एक क्वार्टर का मतलब हो गया जैन फेब मार्च एक क्वार्टर है. ठीक है. आपका रिटर्न्स GSTR1 आप 13th अप्रैल तक फाइल करोगे. सो 13th इज द डेट जब तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हो. अप्रैल में जैन फेब मार्च का 13th अप्रैल तक फाइल करो. अप्रैल में जून का 13th जुलाई तक फाइल करो. ऐसे क्वार्टर के एंड होने पे 13th डे पे आपको फाइल करना है. क्वार्टरली रिटर्न्स है तो मंथली पेमेंट क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा स्कीम लाया है कि आप रिटर्न्स क्वार्टरली पे करिए लेकिन पेमेंट मुझे मंथली चाहिए. तो पेमेंट आप मंथली करोगे लेकिन रिटर्न्स क्वार्टरली फाइल करो. सो QRMP में क्या होता है? ये जो QRMP सप्लायर है जिसने एक्सेप्ट किया कि हाँ भैया मैं क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करूंगा, उसको क्या करना पड़ेगा? मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3. क्योंकि एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने. फर्स्ट मंथ में क्या करेगा वो? जैसे यश भैया ने बोला है कि अगर मैं तीनों का रिटर्न्स कब फाइल करूं? एंड में. तो फिर मेरे कस्टमर को क्रेडिट भी एंड ऑफ द क्वार्टर मिलेगा. लेकिन वो बोलेगा मैंने तो आपसे मंथली परचेज किया है, मुझे क्रेडिट मंथली चाहिए. तो फिर इसके लिए ऑप्शन है IFF. IFF का मतलब है इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, विच मींस आपने इस मंथ में जो भी सप्लाई किया है उसे आप अपलोड कर सकते हो. क्या अपलोड कर सकते हो? आपके इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स इन द IFF बाय द 13th ऑफ द मंथ, ताकि कस्टमर को इमीडिएटली क्रेडिट मिल सके. बिकॉज या कस्टमर आपसे क्यों परचेज करता है? फर्स्ट तो उसे माल चाहिए और उसे GST क्रेडिट चाहिए, दोनों चाहिए. तो माल तो उसे मिल गया, लेकिन आपके इनवॉइस अगर आप क्वार्टरली फाइल करोगे तो उसे क्रेडिट कब मिलेगा? एंड ऑफ द क्वार्टर. तो इसीलिए कहा गया है कि उस केसेस में IFF आप फाइल कर सकते हो जिसका भी क्रेडिट आपको देना है. जिस कस्टमर, अगर कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो उसे क्रेडिट की परवाह नहीं है, लेकिन आपका कस्टमर रजिस्टर्ड है तो आप उसके डिटेल्स IFF में फाइल कर सकते हो. और फाइल करते ही इट बी रिफ्लेक्टेड इन द GSTR 2A, 2B, 4A, 6A ऑफ द रिसिपिएंट. ओके. सेकेंड मंथ में भी ऐसे ही करोगे. तो इस 2 महीने में आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, सिर्फ IFF फाइल करोगे. और मंथ 3 में क्या करोगे? अपलोडेड IFF, ये अपलोड हो चुका है तब आप उसे दोबारा अपलोड नहीं करोगे. ओके. अगर अपलोड किया है, अपलोड मंथ 3 इनवॉइसेस in GSTR1 by the 13th of the first month of the next quarter,
इफ नॉट अपलोडेड देन अपलोड ऑल द मंथ्स इनवॉइसेस। जैसे आपके पास 5 इनवॉइसेस है, 3 आपने फर्स्ट मंथ में अपलोड कर दिया है, तो फिर बैलेंस जो 2 बचे हैं उसे आप थर्ड मंथ में GSTR 1 जब फाइलिंग करोगे उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। क्वार्टरली रिटर्न्स है तो पेमेंट हम पेमेंट लायबिलिटी एस्टिमेटेड इफ डू नॉट फाइल रिटर्न। करेक्ट, पेमेंट जो है एस्टिमेटेड बेसिस पे करेंगे। Sir, IFF is optional. Yes, IFF is optional, not a compulsion. If you want to give the credit to your customers at the end of the quarter, you will just file GSTR 1. IFF, you will not file. Correct. And you can file for some customers IFF and some you don't want. You will file it in GSTR 1. That is also possible. GSTR 2 भी हम आएंगे नेक्स्ट। आपको 1 समझ में आ गया? IFF और 1। IFF facility is made for customers to avail ITC on a monthly basis. Perfect. You're right. ठीक है, so all of this will get uploaded in the IFF. Now what you will do, whatever details you have uploaded, it will reflect. That's the thing. You don't have to upload any scanned copies or anything. What you have to upload, you have to upload the details, what is there in the invoice number, date, GSTI number, type of tax, what is the category of the goods, what is the HSN. That is very important. HSN is a important, which is a harmonized system of nomenclature, which we had discussed. That also you have to give. Now you don't know the HSN, so you have to go to the customs tariff and find for your product what is the HSN code. And while filing the returns, you have to give HSN up to how many digits? You have to give up to 4 digits in case your turnover is below 5 crores. Below 5 crores turnover है, for B2B supply you will give 4 codes, 4 digits, and for B2C supply you will give 4 digits, but it's optional. मतलब B2C supply के लिए देना जरूरी नहीं है. Where it exceeds 5 crores, for B2B supply and B2C supply दोनों के लिए you will give 6 digit codes. ठीक है, आपका टर्नओवर बड़ा है तो फिर आपको ज्यादा HSN देना पड़ेगा, अगर आपका टर्नओवर छोटा है तो फिर छोटा HSN देना पड़ेगा. ये HSN कहां पे देते हैं? आपके रिटर्न्स में फाइल होगा ये. नाउ IFF कॉन्सेप्ट इज क्लियर. एक्सेलेंट सौम्या. GSTR 1 में सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश करते हैं. करेक्ट. So those customers whose reporting is done in IFF, then not to mention the reporting again in GSTR 1. Perfect. You're right. ठीक है, this is fine. When is a registered person not allowed to furnish GSTR 1? When he is not furnished, return is not furnished in GSTR 2B of the preceding month. So you have to file your GSTR 3B of the previous month. Only then you can file GSTR 1 for this month. क्योंकि क्या होता है, पहले लोग GSTR 1 तो फाइल कर देते हैं लेकिन GSTR 3 भी फाइल नहीं करते हैं. तो इसलिए वहां पे कहा गया है कि जो भी आपके पुराने मंथ के रिटर्न्स आउटवर्ड सप्लाई है उसके आप टैक्सेस पे कर दीजिए. टैक्सेस पे करने के लिए आपको GSTR 3B तो फाइल करना ही पड़ेगा. सो इफ यू फाइल GSTR 3B, then we will allow you to file GSTR 1 for this month. Person opting for QRMP scheme who has not furnished GSTR 3B for the previous tax period, उसे भी GSTR 1 या IFF फाइल नहीं कर सकता. And person to whom intimation has been issued, ठीक है, रूल 88C करके एक इंटीमेशन है, उसमें उसको टैक्स पे करना है या फिर रिप्लाई करना है. अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तब भी उसे रिटर्न फाइल करने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी. ठीक है.
सो यू हैव टू फाइल योर 3B, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, अगर रूल 88C के अंदर कुछ नोटिस आया है, तब उसका आपका रेस्पॉन्स तो देना है। अगर रेस्पॉन्स नहीं दिया, एटलीस्ट पेमेंट करना है। दोनों नहीं करोगे तो फिर आपका रिटर्न फाइलिंग के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा। ओके, दीज आर ऑल जनरल क्वेश्चंस। कंटेंट्स ऑफ GSTR1 में क्या होता है? GSTI नंबर, लीगल नेम, टर्नओवर, टैक्स पीरियड, HSN, दीज थिंग्स आर देयर। बेसिक डिटेल्स मतलब क्या टैक्सेबल सप्लाई है, आपका टर्नओवर कितना है, दिस आई विल टेल यू टर्नओवर के बेसिस पे। इफ योर यू हैव टू गिव इनवॉइस वाइज डिटेल्स, मतलब हर इनवॉइस का डिटेल आपको देना पड़ेगा। आपके पास 50,000 के इनवॉइसेस, 50,000 लाइन आइटम्स है, आपने 50,000 इनवॉइसेस रेस किए एक महीने में, आपको सभी अपलोड करना है। अगर उसमें कस्टमर B2B है, मतलब कस्टमर रजिस्टर्ड पर्सन है, तो फिर आपको सभी इनवॉइसेस अपलोड करना है। तो जो भी रजिस्टर्ड कस्टमर है, उसको आप क्या करोगे? इनवॉइस तो रेस करोगे और रिपोर्ट करोगे ही। लेकिन B2C कस्टमर्स है, मतलब जिनके आपके पास कस्टमर ने GSTN नंबर नहीं दिया है, वो अनरजिस्टर्ड है, उनके रिपोर्टिंग आप इनवॉइस वाइज कब करोगे? इफ इट इज इंटरस्टेट एंड वैल्यू इज मोर देन 1 लाख। दो कंडीशन होना चाहिए। सो अनरजिस्टर्ड है, 50,000 है, 60,000 है, 80,000 है, 90,000 है, आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। उसको क्या करोगे? आप कंसोलिडेटेड में लेके आ जाओगे। कंसोलिडेटेड विल बी फॉर B2C इफ इट इज इंट्रास्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, एनी वैल्यू, ईच रेट वाइज आपको कंसोलिडेट करना है। 18% के अंदर कितने अनरजिस्टर्ड है, 5% के अंदर कितने हैं, और 12% के अंदर कितने हैं, और 28% के अंदर कितने हैं। ईच रेट वाइज हाउ मच आर यू सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंट्रास्टेट। एंड फॉर इंटरस्टेट मोर देन 1 लाख तो आप इनवॉइस वाइज ही दोगे, तो फिर लेस देन 1 लाख वालों को आप यहाँ पे कंसोलिडेट कर सोगे। क्लियर? How do big companies manage? They have softwares. Manually, it will not be possible. So, manually, not possible. They will use systems and softwares. 1 lakh is per invoice per customer. Correct. 1 lakh per invoice per customer only. To understand this in a better manner, invoice wise are consolidated. Blue color is invoice wise. When you make interstate and intrastate supplies to registered persons, then you have to give invoice wise details. And if it is B2C interstate, value is more than 1 lakh, three conditions: B2C, interstate, and 1 lakh. If three conditions are met, then it has to be invoice wise. If it is B2C interstate less than 1 lakh, then rate of tax state-wise, and if it is B2C intrastate, then also it is consolidated. So these two will be consolidated wise. Two lakh 50,000. Priyanshi, 2,50,000 is not the criteria here. It changed तो नहीं हुआ है ना? 1 lakh ही है। आपके पास पुरानी बुक है? आई विल शो यू द रेलेवेंट पोर्शन, बिकॉज 15.15 जो आप रेफर कर रहे हो, दैट्स द रॉन्ग रेफरेंस। नया रेफरेंस है 15.16, वेयर इट सेज इट इज 1 lakh rupees. B2C is for persons who do not have GST registration. And if they don't give
then also you will report it under B2C itself, because you cannot get their GST number unless they give it to you. ओके, तो आप लेटेस्ट मॉड्यूल डाउनलोड कर दीजिए प्रियांशी, देन यू विल गेट दिस. 15.14 पे 2.5 लिखा है, बट एक्चुअली इट इज 1 lakh itself. There is a mistake here in this part. Yes, change it. It should be 1 lakh only everywhere. So amendments, if there is any changes, can you amend the returns? There is no provision to amend the returns. Okay. So what you can do is you can do a rectification. जब भी आपके इनवॉइस आपने जो अपलोड किया है, मिस्टेक्स हो जाता है रिटर्न्स फाइल करते वक्त, करेक्ट. सो जो भी मिस्टेक्स होते हैं उसका करेक्शन आपको अमेंडमेंट करने का फैसिलिटी नहीं है, आप रेक्टिफाई कर सकते हो. जो भी रेक्टिफाई भी करना है आपको 30th November फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर. जो सभी प्रोविजन आईटीसी में भी हमने पढ़ा है कि विद इन दैट यू कैन क्लेम, सेम प्रोविजन यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि इट विल बी अपलोडेड और इट कैन बी अमेंडेड विद इन दिस डेट इटसेल्फ. रेक्टिफिकेशन और अमेंडमेंट, अमेंडमेंट में क्या होता है कि आपको जो भी डिटेल्स है उसको आप अमेंड कर सकते हो. जैसे आपको 500 रुपए करना था, आपने 1000 रुपए कर दिए, तो आप उसको अमेंड कर सकते हो. रिटर्न्स अमेंड मतलब पूरा रिटर्न अमेंड हो सकता है. लेकिन रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, स्पेसिफिक इनवॉइसेस, जो इनवॉइस आपने गलत किया है उसका ही आप रेक्टिफिकेशन करते सकते हो GSTR 1 में. लेकिन उसका इफेक्ट जो टैक्स ऊपर या नीचे पे करना पड़ेगा उसको आप GSTR 3B में ही पे करोगे. नेक्स्ट इज, अगर आपको रिटर्न गलत है, जैन वी सेड कि अमेंड कर सकते हो, तो अमेंड करने के लिए एक नया रिटर्न आया है, उसका नाम है GSTR 1A. ओके, इट्स डेफिनेटली एन ऑप्शनल थिंग. अगर आपने करेक्ट फाइल कर दिया है तो फिर 1A के अंदर आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. सो इट्स एन ऑप्शनल फैसिलिटी. इट कैन बी फाइल्ड ओनली वंस फॉर अ रिटर्न पीरियड. कि एक GSTR 1 है, उसका आप एक बार अमेंड कर दिया हो, उसमें भी मिस्टेक हुआ, कैन यू अमेंड इट अगेन? नो. अमेंडमेंट सिर्फ एक बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता है. इट अलोज टू अमेंड द रिकॉर्ड्स फाइल्ड इन फॉर्म GSTR 1 ऑफ द करंट पीरियड. पुराने महीने का करेक्शन आप GSTR 1A में नहीं कर सकते हो. इस महीने का जो भी रिटर्न फाइल किया है उसी का अमेंडमेंट आप 1A में कर पाओगे. जो भी इसका इफेक्ट रहेगा उसका इफेक्ट GSTR 3B में टैक्स पे करने के पहले करना पड़ेगा. तो इसीलिए GSTR 1A इज टू बी, 1 का ड्यू डेट कब है? 11th. और 3B का ड्यू डेट कब है? 20th. तो आपको अमेंडमेंट जो है 11th to 20th तक ही कर सकते हो. ठीक है. और रिसिपेंट को GSTR 2B में जो जनरेट होगा वो अमेंडेड वैल्यू ही होगा. ठीक है. इफ यू हैव फाइल्ड ओके ऑन टाइम बिफोर ड्यू डेट ऑफ GSTR 1 आपने अमेंड किया तो इसी महीने में होगा.
लेकिन ड्यू डेट ऑफ 1 के बाद अगर आप अमेंड करोगे तो फिर उसका इफेक्ट अगले महीने में होगा. इट विल नॉट बी अ इम्पैक्ट दिस मंथ, इट विल हैव अ इम्पैक्ट इन द नेक्स्ट मंथ. इट कैन बी अमेंडेड ओनली इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल, राइट. डायरेक्टली आप कर सकते हो, किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है. देर इज नो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग 1A. जब भी आप फाइल करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन उसका इफेक्ट अगले महीने ही मिलेगा. बट विच एवर इज लेटर, जैसे मैंने कहा, टिल विच इज अवेलेबल टिल द एक्चुअल फाइलिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग 3B. 3B के पहले आपको 1A फाइल करना है, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे. Rectification in GSTR-1 and payment of taxes in 3B. But sir, if we have refund after payment in 3B, so what is your question? If you have any refund, how will you have refund after filing 3B? If this month चाहिए तो 1A का benefit. Please ask your questions clearly so that I can understand and then respond it. So understood 1 and 1A. 1 is saying that yes, कि आपका आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 है, अमेंडमेंट विल हैपन इन जीएसटीआर 1A. Once that happens, then you have communication of details of inward supply. जैसे आउटवर्ड सप्लाई के लिए 1 है, इनवर्ड सप्लाई के लिए ये हो जाएगा फ्लो चार्ट. जो सेल्स है वो जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट हो गया. इट विल गेट ऑटो पॉपुलेटेड इन जीएसटीआर 2A, and from this GSTR 2A you will claim the credits and file the return in GSTR 3B. सिंपल है. इसी मंथ में 1A का बेनिफिट चाहिए तो नहीं मिलेगा आपको. 1 में डिटेल्स करेक्ट मेंशन करना चाहिए था. अगर आपने 1 में मिस्टेक किया तो उसका इफेक्ट आपको कस्टमर को अगले महीने ही मिलेगा. From where rectification done? Rectification is done in GSTR 1A on the GST portal itself. So कैसे फ्लो होता है? सप्लायर 1 फाइल करता है और रिसीवर 1A का बेनिफिट लेता है. Got it? So GSTR 1 has no due date, but we have to do that before filing of 3B. Then it will have due date till 20th. Correct. सर अगर GSTR 1 में टैक्स कम होता है, कम नोट किया है, पर GSTR 1 में रेक्टिफाई कर दिया हो तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा. करेक्ट. इसी के लिए GSTR 1 लेके आया गया है ताकि उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लगे. यू आर परफेक्ट, राइट. रिसीवर विल गेट 1A या 2A. 1A नहीं 2A ही मिलेगा. 1A तो हमारे लिए है, अमेंड करने के लिए है ना. Maximum time limit for furnishing form GSTR 1 11th, and for QRMP 13th. 11th is for GSTR 1 and 13th is for QRMP. लोग जो IFF और GSTR 1 फाइल करना चाहते हैं
तो क्वार्टरली रिटर्न्स वालों के लिए 13 थे, मंथली रिटर्न्स फाइल करने के लिए वालों के लिए है 11th। When will the ITC get credited in the customer's electronic credit ledger? It gets credited in the electronic credit ledger of the customer when he files his GSTR-3B. Okay, it will appear in his GSTR-2B once you file your GSTR-1. From 2B, he will have to file this GSTR-3B returns. Once he files his 3B returns, then it will get credited in his electronic credit ledger. 2A और 2B में विच डिफरेंस आएंगे? 2A में भी दिखेगा ये क्रेडिट, 2B में भी दिखेगा, हम वहां पे आ रहे हैं। आंसर माय क्वेश्चन। निधि, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग वन हमने बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ऑन सेक्शन 38, कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स। जो भी इनवर्ड डिटेल्स है वो कस्टमर को कम्युनिकेट हो जाएंगे थ्रू GSTR-2B। auto generated statement. Okay, what does it say is whatever is the details of outward supply which is supplied by the registered person, वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट में मिल जाएगा, which is the GSTR-2B रिटर्न। ओके, अभी GSTR-2B में जो होगा आपको ऑटो जनरेटेड होगा दो कैटेगरी में। वन इज कैटेगरी ए विच इज डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ITC मे बी अवेलेबल, ठीक है। जो दो कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी में क्या होगा, आपको क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन कैटेगरी बी में जो रहेगा वो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपके पास जो GSTR-2B दिखेगा वो दो आइकॉन्स दिखेगा, वन इज क्रेडिट विच इज अवेलेबल एंड वन इज क्रेडिट विच इज नॉट अवेलेबल। Why it will not be available? The act says if you buy any goods from 1, 2, 3, 4, 5, 6, these 6 category of people, then you will not get the credit. Who are these 6 category of people? If you're buying from a person who is new registrant, वो नया registration लिया है, credit नहीं मिलेगा। Second is who has defaulted in payment of tax, उसने tax तो pay नहीं किया तो फिर आपको credit भी नहीं मिलेगा। Whose output tax payable as per GSTR-1 exceeds the output tax paid in GSTR-3B। 1 और 3B हमने बताया कि सेम होना चाहिए, लेकिन कोई होशियार चंद क्या कर देते, GSTR-1 में तो 1 करोड़ बता देंगे और GSTR-3B में सिर्फ 1 लाख। करेक्ट, तो ऐसे लोगों से भी जब आप परचेज करोगे तो आपका क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। और यू हैव अवेल्ड ITC फॉर एन अमाउंट, और दैट कस्टमर, the supplier who is supplying it to you, he has availed more credit than what is there in 2B। 2B में जितना क्रेडिट है उतना ही लेना चाहिए, बट भाई साहब ने ज्यादा ले लिया एंड यू आर बाइंग फ्रॉम दैट पर्सन, तो फिर अभी आपका क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। और who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with provisions of 49 related with 86B, that is who has discharged more tax liability from the electronic credit ledger, जैसे हमने बताया लास्ट क्लास में, availing credit more than 99%। और अदर क्लास ऑफ पर्सन, अगर गवर्नमेंट कुछ नोटिफिकेशन देता है तो दोस काइंड ऑफ पर्सन। अदरवाइज 5 कैटेगरी ऑफ पीपल से जब आप परचेज करोगे तब आपका क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। नाउ हाउ डू वी नो वेदर विच कैटेगरी ऑफ दिस, हमको ये जानने की जरूरत नहीं है, GSTR-2B में ही गवर्नमेंट पोर्टल फाइंड आउट करके उसको सेग्रीगेट कर देगा कि दीज आर द कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर गिवन क्रेडिट टू यू, but you cannot claim the credit because they are the restricted category of people. Now, what is this 88C and what is this 1 and 3B? Generally, if you see as spectacles, both will be of the same size or one will be more, one will be less.
दोनों में पावर जनरली सेम होगा, लेकिन इफ द GSTR1 इज मोर देन GSTR3B, मतलब आपका बैलेंस नहीं है, योर आईज one is big, one is small. In that case, there will be a difference in the liability, because in GSTR1, what you are declaring outward supplies, which is your declared liability, and 3B is your paid liability. GSTR1 में जैसे we had given example कि आपने 1 crore दिखा दिया है और 3B में सिर्फ 1 लाख दिखा दिया है, तो गलत है ना। आपने 1 करोड़ का तो क्रेडिट पास ऑन कर दिया कस्टमर्स को, लेकिन आप टैक्स पे कर रहे हो सिर्फ 1 लाख, सो दैट इज नॉट करेक्ट। तो इसीलिए जब देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस GSTR1 एंड 3B, आपको एक सुंदर सा नोटिस मिलेगा रूल 88C में, और वो नोटिस क्या बोलेगा, आपको ऑनलाइन पोर्टल में डिफरेंस दिखाई देगा, सेइंग दैट पे द डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी। 1 करोड़ यहाँ पे आपने दिखाया है, यहाँ पे 1 लाख है, बाकी 99 lakhs पे कीजिए। सो यू हैव टू इधर पे इट, एक्सेप्ट करके पे कीजिए, या फिर एक्सप्लेन कीजिए कि नहीं, कुछ भी रीजन की वजह से यू हैव टू जस्टिफाई कि आपका GSTR1 3B से ज्यादा क्यों है। देयर कुड बी वेरियस रीजंस, आपने पुराने मंथ में क्या किया रहेगा, GSTR3B ज्यादा पे कर दिया होगा और उसका 1 कम था, सो दैट कुड बी द रीजन, और एनी अदर लेजिटिमेट रीजन है तो फिर उसका आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। इफ द ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, देन ही विल क्लोज इट, अदरवाइज यू हैव टू पे द टैक्स unless any of the above action is taken। जैसे वहां पे रिटर्न में बताया था कि इफ यू डू नॉट कंप्लाई विद द 88C, तब आपको GSTR1 फाइल करने में बंद हो जाएगा। ओके, so you have to either pay or explain the difference, then you'll be able to file your returns. If declared less but afterwards 3B में paid more, afterwards कैसे हो सकता है, नेक्स्ट कब हो सकता है आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि रिटर्न तो मंथली में आप एक ही फाइल करोगे, हाउ कैन इट बी आफ्टरवर्ड्स देन। So even if you have such a reason that afterward you have paid, so then mention it in the explanation. But we have exempt supplies to be shown in GSTR1. ठीक है, exempt supplies are there in GSTR1. You have to show it in the 3B also, because in 3B you have total value, which will include exempt value also. So 1 and 3B will always match, even if there is an exempt. In 1, you will show exempted turnover. In 3B, you will add it to the total turnover, because exempt turnover will also get to your total turnover. 1 में कम दिखाया है और 3B में एक्चुअल पे किया है। ओके, 1 में कम दिखा दिया है तो फाइन, यू विल टेल दैट दैट इज अ एक्सेस पेड, you will either claim a refund of it, or next month you will say that I will report whatever is the shortfall what I have reported in the previous month. Now GSTR 2A and its features, and GSTR 2B and its features. Okay, what is 2A and 2B? Both are system generated and the data is available. But if you see, when 2B is available and when 2A, what is the basic difference between GSTR 2A and 2B is that 2A, you get the details on a real time basis, but in 2B, it is available once a month. So this is static and this is डायनामिक। मतलब GSTR 2A में अगर किसी का रिटर्न्स उसने आप डाउनलोड कर रहे हो GSTR 2B फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ओके, अप्रैल का रिटर्न सब सप्लायर्स ने फाइल टाइम पे कर दिया और मई में आप डाउनलोड कर रहे हो, सो योर GSTR 2A विल शो दैट नंबर। इन द नेक्स्ट मंथ इफ यू डाउनलोड द सेम अप्रैल मंथ्स रिटर्न्स, इट विल बी डिफरेंट। Why? Because some suppliers would have filed their returns late.
So that also will appear in that respective month itself. That's why it's dynamic. कि अगर कोई सप्लायर उस मंथ का डिटेल्स अपडेट कर देता है, इवन इफ ही फाइल्स इट आफ्टर द ड्यू डेट, आफ्टर अ मंथ, आफ्टर फ्यू कपल ऑफ मंथ्स, still it will go and touch in that month itself, right? But in 2B it doesn't matter, it doesn't happen like that. अगर अप्रैल मंथ का रिटर्न्स उसने फाइल कर दिया है तो अप्रैल मंथ में दिखेगा, अगर वो लेट फाइल करता है तो फिर अगले महीने में दिखेगा आपको. सो दैट्स व्हाई 2B इज अ स्टैटिक इंफॉर्मेशन कि एक बार आपने डाउनलोड कर दिया तो फिर उसका फिर से नहीं मिलेगा बेनिफिट. ठीक है, उसका जो भी क्रेडिट मिलेगा आपको अगले महीने में ही दिखेगा. सो 2B इज मोर रिलायबल क्योंकि 2A हमेशा चेंज होते रहता है. 2B when it is available on the first and second month of a quarter, जब IFF फाइल करते हैं तब in the IFF by a registered person opting for QRMP or in form GSTR-1 by a registered person, whichever is later. So either first year 13th, because GSTR-1 is on the 11th and IFF is on the 13th. So 13th के बाद आपको GSTR-2 भी दिखेगा and at the end of the quarter by the 13th, क्योंकि सभी का डेट 13th हो जाएगा. ठीक है, सो जब व्हेन कैन यू डाउन, बिफोर दैट यू कैन नॉट डाउनलोड बिकॉज इट विल नॉट गिव यू करेक्ट इन्फॉर्मेशन. ऑल द सप्लायर्स हैज टू फाइल एंड दे कैन फाइल फ्रॉम एनी डेट फ्रॉम द फर्स्ट टू 13th. तो 13th के बाद आपको जीएसटीआर टू बी डाउन कर सकते हो. So that's why I'm saying, in effect, GSTR2B will be made available by the 13th of the subsequent month. Now, before next is GSTR3B. We'll take a break of 10 minutes and come back and discuss on furnishing of returns under 3B.
3B returns, right? Whatever we discussed now is outward supply and inward supply. Now, returns actually means returns which you file and pay the tax. So only this is the return where you file the returns and pay the tax. Who is eligible to file this GSTR-3B return? Every registered person other than ISD, NRTP, composition dealer, and TDS and TCS peer. Apart from this, everybody will file GSTR-3B and they will all file monthly. Only one exception is QRMP scheme. That if you are under QRMP scheme, you will file a returns on a quarterly basis, IFF on a monthly basis. But GSTR-3B, you cannot do anything on a monthly basis. You have to file it on a end of the quarter itself. Okay. So QRMP filers have to file at the end of the quarter and it has to by all registered person. For ISD, NRTP, composition dealers, they don't have to file this. For them, there is a separate return. Okay. What form? GSTR-3B. It has summary of outputs, inward supplies, which is liable to reverse charge, and eligible ITC and payment of tax. Mostly 4 categories. So output tax, and it's also summary because detail is there in GSTR1. Summary of the GSTRs ones will be here in GSTR-3B. So summary of your outward supplies. Then all your inward supplies on which you have to pay reverse charge. Then eligible ITC and payment of tax. Once you file this, then one category is what? This is very important, eligible ITC. If you file your data in your eligible ITC, then you can claim the credit in your GSTR. It will appear in your electronic credit ledger. So electronic credit ledger amount automatic नहीं आता है. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये एलिजिबल आईटीसी का अमाउंट डालने पे, ठीक है. मंथली व्हेन इट हैज टू बी फाइल्ड, मंथली फाइलर्स आपको 20th फाइल करना है और क्वार्टरली फाइलर्स आपको 2 डेट है, 22nd और 22nd, डिपेंड्स ऑन योर स्टेट. सो विच स्टेट यू आर बिलोंगिंग टू, डिपेंड्स ऑन दैट यू विल फाइल द रिटर्न. हु इज अ आईएसडी? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. वो एक अलग कैटेगरी है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है क्रेडिट को. नाउ that is a separate topic by itself. An input service distributor is one who distributes the credit within his own company. They are called the input service distributor. NRTP not have to file, so CTP has to. Yes, CTP both na baba. ISD, NRTP and composition dealer, both they don't have to file. Casual person, yes, he has to file. NRTP need not file. Casual taxable person has to file. Okay. Now, monthly filers all over India, 20th. For quarterly filers, अगर आप इस states में हो तो फिर 22nd. Basically, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ऑल बिग स्टेट्स जो रेवेन्यूज उन पे ज्यादा होते हैं वहां पे 22nd. और जो छोटे स्टेट्स हैं उनका ड्यू डेट हो जाएगा 24th. ठीक है. तो मंथली रिटर्न फाइलर्स सभी स्टेट्स के लिए 20th है. क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स के लिए ये स्टेट वालों को 22nd और नीचे वाले स्टेट्स को 24th. We have to remember states? Not exactly. States आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है. Summaries for inward supplies of RCM or monthly summaries of outward supplies. Summary is for outward supplies, summary is for RCM, and summary is also for input tax credit. For all, you will give only summary. Detailed, you will not give it here at all. थ्री में कुछ अपलोड करना होता है, सिर्फ वैल्यूज, नथिंग एल्स. QRMP स्कीम हमको पता है ये ऑप्शनल है, लेस देन 5 crores वालों के लिए है. दे कैन फर्निश 3B and 1 on a quarterly basis or 3B on a quarterly basis and instead of 1 IFF on a monthly basis. 1 IFF on a monthly basis. GSTR1 जो है वो quarterly ही जाएगा. And a person who is opting for QRMP scheme is GSTN wise.
जैसे आपके पास 10 जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, 1 GST कैन आई ऑप्ट फॉर क्वार्टरली, 1 फॉर मंथली, यस पॉसिबल, नॉट लाइक कॉम्पोजिशन डीम। कॉम्पोजिशन में अगर एक जीएसटी आप कॉम्पोजिशन करते हो तो सभी रजिस्ट्रेशन आपको कॉम्पोजिशन करना पड़ेगा। बट इन क्यूआरएमपी अगर आप एक जीएसटी इनके लिए क्वार्टरली करते हो, एक मंथली, यस पॉसिबल। सेम प्रीवियस पीरियड को फाइनल करने के बाद इस महीने करेंगे। हाउ टू एक्सरसाइज, कब आपको एक्सरसाइज करना है? बाय द फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ। मतलब लेट्स टेक दिस एग्जांपल, अगर आपको अप्रैल टू जून में ऑप्ट करना है, इसके पहले आप मंथली फाइलर्स थे और नेक्स्ट क्वार्टर में आपको क्यूआरएमपी ऑप्ट करना है, तो फिर आपको 1 फरवरी से लेके 30 अप्रैल इस विंडो के अंदर आप ऑप्ट इन कर सकते हो। क्योंकि अप्रैल का रिटर्न तो आप मई में फाइल करोगे, इसीलिए अप्रैल 30 तक आपके पास टाइम है। और इस क्वार्टर के एक महीने पहले से ही शुरू हो जाएगा, 2 महीने से पहले इनफैक्ट। फेब्रवरी और मार्च और अप्रैल, इन 3 महीने मिलेंगे आपके क्वार्टर के आसपास में। सो अगर अप्रैल टू जून है तो फिर फेब्रवरी टू अप्रैल। तो व्हाट विल बी द डेट्स विच ही कैन ऑप्ट फॉर जनवरी टू मार्च? Now you will understand this. First day of the second month of the preceding quarter till the last day of the first month of the quarter. So for Jan to March, what will be the date? Now you want to opt for QRMP for Jan to March. By when you should opt? What is the opting window? Very correct, Yash Podar. Chauhan Tej Prakash, you're wrong. Ishan Bisht, you're correct. Now, Yash, you are also wrong. अप्रैल नहीं, पूरा डेट है ना, पूरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको पता चलेगा। इस सेंटेंस को पढ़िए। करेक्ट देवू मित्रा। अल्मास करेक्ट। साहिल कुमार करेक्ट। यश नाउ यू आर राइट। चौहान तेज प्रकाश नाउ यू आर राइट। प्रियांशी तक राइट। गुड। एक बार एग्जाम्पल देते हैं तो फिर वो थ्योरी पार्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं आप लोग। यस, फॉर जैन टू मार्च यू हैव अ टाइम फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रिसीडिंग क्वार्टर। इसका सेकेंड मंथ ऑफ द प्रिसीडिंग क्वार्टर क्या है? प्रिसीडिंग क्वार्टर है अक्टूबर टू दिसंबर, सेकेंड मंथ हो जाएगा नवंबर। सो फ्रॉम 1 नवंबर टू इस महीने का फर्स्ट क्वार्टर विच इज जनवरी, तो 1 नवंबर टू 31 जनवरी, इसके बीच आपको ऑप्ट इन करना पड़ेगा। ठीक है। एंड नो नीड टू एक्सरसाइज ऑप्शन एवरी क्वार्टर। एक बार आपने ऑप्ट इन कर लिया तो हर क्वार्टर क्यूआरएमपी है। ऑप्शन शैल लैप्स व्हेन इज एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉसेस 5 करोड़। अगर आपने क्यूआरएमपी कर लिया लेकिन आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया तो फिर वो लैप्स हो जाएगा, देन बीच में ही आपको मंथली कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो भी आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट आपके पीछे नहीं पड़ेगा। सेम वॉलंटरी कंप्लायंस, यू विल हैव टू कंप्लाई विद इट। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको क्वार्टरली सूटेबल नहीं है, यू वांट टू मूव टू मंथली, यू कैन वॉलंटरी ऑप्ट आउट फॉर मंथली फाइलिंग। सेम पेमेंट का मैं बताता हूं। इसमें क्या होगा? जीएसटीएन ऑफ द बिजनेस, लीगल नेम, ट्रेड नेम, समरी ऑफ योर आउट, GSTR-3B का बोल रहा हूँ, समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई, समरी ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज, एलिजिबल आईटीसी। नाउ एलिजिबल आईटीसी में वेरियस कैटेगरीज हो जाएंगे। व्हाट इज योर आईटीसी विच इज अवेलेबल, व्हाट इज द आईटीसी और रिवर्स, एंड बैलेंस इज योर नेट आईटीसी। जो अवेलेबल है उसमें से रिवर्स करेंगे तो फिर नेट आईटीसी हो जाएगा। एंड इन एलिजिबल आईटीसी, जो आईटीसी ब्लॉक्ड होते हैं सेक्शन 17(5) में, जो आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते, उसको आप 4D में रिपोर्ट करोगे। ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट, निल रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज, ये भी मेंशन करोगे। व्हाट इज द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड व्हाट इज द टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट। Nil returns, what you will file is a return
November 1 to January 1 नई पवन, November 1 to January 31st। अगर आपका टर्नओवर नहीं है तो फिर आप क्या रिटर्न फाइल नहीं करोगे? इफ यू डू नॉट हैव रिटर्न यू विल स्टिल हैव टू फाइल नील रिटर्न, बिकॉज गवर्नमेंट को पता नहीं है कि आपने रिटर्न गलती से मिस्टेक कर दिया है या फिर आपका टर्नओवर जीरो है। उसका क्लियरली इंडिकेशन करोगे बाय फाइलिंग नील रिटर्न्स। Revised returns, as we had said in GST, since the returns are built from the details of individual transaction, मतलब वन का तो अमेंडमेंट आप GSTR 1A में कर लोगे, लेकिन GSTR 3B को आप अमेंड नहीं करोगे। सो एनी टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन, अगर आउटवर्ड सप्लाईज है, क्रेडिट नोट्स वगैरह है, दैट इज यू हैव टू डू द करेक्शन बाय द 30th day of the November or the date of filing annual return, whichever is earlier। ठीक है, दिस वी हैव अंडरस्टूड। रिटर्न्स फॉर अ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, या एनी क्वेश्चंस हियर? 3A होता है या सिर्फ 3B? सिर्फ 3B। 3B 3A नहीं होता है। 3B में ही आपको रिटर्न फाइल करना, पेमेंट करना पड़ेगा। उसका करेक्शंस जो भी है आप अगले महीने में करेक्शन कर सकते हो, बस। सो दैट्स ओनली अ करेक्शन, नॉट अ अमेंडमेंट। 3B का अमेंडमेंट नहीं होता है। 3B का जो भी डिफरेंशियल है वो अगले महीने के 3B में आप एडजस्ट करोगे। हेलो। इतने ही रिटर्न है, और भी रिटर्न है, और भी देखेंगे। सो नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए उतनी ही है। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए है रिटर्न नंबर GSTR 4। ये क्या करेगा बंदा? कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है तो सिर्फ एनुअल रिटर्न फाइल करेगा। बढ़िया है। क्वार्टरली रिटर्न वालों को तो क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा, लेकिन कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को साल में एक ही रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एनुअल रिटर्न विल बी फाइल्ड इन फॉर्म GSTR 4 बाई 30th June। सो अप्रैल से लेके मार्च का जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है वो रिटर्न फाइल करेगा 3 महीने बाद। ठीक है, बाई 30th June ही विल फाइल हिज QRMP रिटर्न्स, नॉट QRMP, composition returns, and it will be filed by a composition taxpayer who is registered under 10। लेकिन टैक्सेस जो है वो क्वार्टरली पे करेगा। जैसे QRMP पे क्वार्टरली रिटर्न है, मंथली पेमेंट है, ऐसे कॉम्पोजिशन का एनुअल रिटर्न है, पेमेंट क्वार्टरली है। ठीक है, दो हैव टू डू अ सेल्फ असेसमेंट, और ये क्वार्टरली बाय 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। अप्रैल मई जून का जुलाई 18th को पे करेगा। सो ही विल पे द इनवर्ट सप्लाईज भी ऑटो पॉपुलेट होंगे, बट नो ITC की कैन बी क्लेम बाय दैट। ओके, दैट्स ऑल। 1B देयर इज नो रिटर्न, चौहान। और इसके रिटर्न्स में बेसिक डिटेल्स रहेंगे, नथिंग मच टू बी लुक्ड इनटू दिस। नाउ इफ वन पर्सन, व्हाट हैपेंस सर? कॉम्पोजिशन कभी मंथली फाइल नहीं करेगा, नहीं करेगा। उसका रिटर्न्स ही ऐसा बनाया गया है कि he will file the returns on an annual basis, पेमेंट क्वार्टरली करेगा। कॉम्पोजिशन टाइमलाइन प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो है क्वार्टरली पेमेंट करेगा, हर एक क्वार्टर का सेल्स अक्यूमुलेट करके बाई 18 वो पे करेगा अपना टैक्सेस। और रिटर्न्स जो है पूरे साल का एक साल में एक ही बार पे करेगा, एक दो बार फाइल करेगा बाय द जून ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे 24-25 का है, उसका ड्यू डेट 30th June को आएगा। ठीक है, नाउ इफ यू आर अ पर्सन हु आर पेइंग रेगुलरली,
अभी आपको कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर में जाना है, जा सकते हो, जा सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स और रिटर्न्स रिलेटिंग टू द पीरियड प्रायर टू द ऑप्टिंग फॉर द स्कीम शुड बी फाइल्ड। जो भी आपके पुराने जीएसटीआर 3B वगैरह है, आपको पूरे फाइल किए रहने चाहिए, ओके। Till the due date of furnishing of the return for the month of September of the succeeding financial year or furnishing of annual return whichever is earlier, इस टाइम पीरियड पे आपको फाइल करने पड़ेंगे। आप रेगुलर से कॉम्पोजिशन आते हो तो ऐसा नहीं कि आपको फाइल करके फिर आना है। आप कॉम्पोजिशन में ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन आपको जो भी रिटर्न है आपको सितंबर या फिर एंड ऑफ बिफोर फाइलिंग एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना है। नाउ फ्रॉम कॉम्पोजिशन टू रेगुलर, मतलब आप कॉम्पोजिशन से एग्जिट कर रहे हो, रेगुलर में आ रहे हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी CMP 8 for prior period prior to exit from composition to be filed by the scheme by the 18th day of the month succeeding the quarter in which the date of withdrawal falls। अब जिस मंथ में विड्रॉ कर रहे हो उसके 18th डे, उस क्वार्टर के एंड के 18th डे में आपको CMP 08 फाइल करना है और GSTR 4 फाइल करना है फॉर द पीरियड प्रायर टू एग्जिट फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम। ये कब तक फाइल करना है, 30 जून तक फाइल करना है, ठीक है। तो जो भी मंथली नॉर्मल एनुअल रिटर्न है वो आपको फाइल करना है और रेगुलर में भी आपको एनुअल फाइल करना है, लेकिन कॉम्पोजिशन टू रेगुलर में जब जाते हो आपके रेगुलर रिटर्न के अलावा एक और रिटर्न है CMP 08, वो भी फाइल करना है। Summary of the self-assessed tax, whatever is payable and who are registered as a composition taxpayer. So this is basically a return itself end of the year. तो अब तक जो भी डिटेल्स है वो आप CMP 08 में फाइल करो। समझ गए तेज प्रकाश? जब आप रेगुलर टैक्स पेयर हो, अभी कॉम्पोजिशन में जा रहे हो, जब जो भी आपके रिटर्न्स फाइल करने हैं उसको आपको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कॉम्पोजिशन में आ गए हो तो पुराने रिटर्न्स उड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, आपको पुराने रिटर्न्स भी फाइल करने पड़ेंगे, उसके लिए टाइम दिया गया है। और कॉम्पोजिशन में रेगुलर आते हो तब आपके भी रेगुलर रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, प्लस CMP 8 एक एक्स्ट्रा रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। Means quarterly CMP 8 and payment of taxes for 18th of the succeeding month. Correct. CMP 8 is for quarter and GSTR 4 is for annual. You are absolutely right. Cancellation of composition registration, कि आपने कॉम्पोजिशन किया है, आपको कैंसिलेशन करना है जब आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है बियॉन्ड पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, मतलब जून तक टाइम दिया गया है आपको, जुलाई अगस्त सितंबर और 3 महीने टाइम देते हैं कि आप इंटरेस्ट के साथ पे कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका रिटर्न लेट है तो आपको इंटरेस्ट और लेट फाइलिंग फीस पे करना पड़ेगा। तो हम तीन, गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको पहले ही दे रही है 3 महीना टाइम फाइल करने के लिए और एक्स्ट्रा 3 महीना दे रही है, टोटली 6 महीना दे रही है। इफ यू डू नॉट फाइल इट इवन बाई सितंबर तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। CMP 8 विड्रॉल का नहीं है, CMP 8 पेमेंट का है। 15.43, ओके, 1 मिनट। इसमें 30 अप्रैल दिया गया है मैडम, लेकिन आप फुट नोट भी देखिए, यू हैव टू रीड कंप्लीटली। तो फर्स्ट दिया गया है 30 अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच सच विड्रॉल फॉर्स, लेकिन यहाँ पे एक छोटा वाला 20 वाला भी है ना। 20 क्या बोलता है, एज स्टेटेड अर्लियर
Due date of filing GSTR4 will be 30th June following the end of such financial year from 24-25 onwards. तो 23-24 तक अप्रैल था, 24-25 से 30th जून हो जाएगा. तो अपने एग्जाम्स के लिए क्या डेट रिलेवेंट है? 30th जून itself. नाउ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या करेगा? by the 13 days from the end of the calendar month or 7 days from the last date of validity period. इस टाइम पे वो जीएसटीआर फाइल करेगा. जीएसटीआर 5. नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो बाहर से आता है, यहाँ पे धंधा करता है और चला जाता है, उसका रिटर्न वो फाइल करेगा, मंथली फाइल करेगा बाई 13 days फ्रॉम द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ. ठीक है. अगर वो बीच में आया है और उसका मंथ एंड तक वेट नहीं करेंगे, अगर उसका वैलिडिटी हो गया तो फिर 7 days में. जैसे अगर ही इज कम ऑन द 15th और उसका वैलिडिटी पीरियड है 2 months, सो इफ इज कम ऑन 15th जनवरी, तो जनवरी का एक रिटर्न फाइल करेगा, फेब्रुवरी का एक रिटर्न फाइल करेगा, बिकॉज हिज वैलिडिटी स्टार्ट फ्रॉम 15th जनवरी, एंड्स ऑन 1 जनवरी, और 2 महीना है तो 15th जनवरी, 15th February, 15th March. He can be in India only till 15th March, और उसने एक्सटेंशन कुछ अप्लाई नहीं किया है. ठीक है. तो जनवरी का 15 डेज का एक रिटर्न विच विल बी बाई 13th, एंड फेब्रुवरी का 13th. नाउ मार्च ही इज गॉट टाइम टिल 15th ही उसका वैलिडिटी है, तो फिर नेक्स्ट मंथ 13 तक वेट नहीं करेगा. 15th मार्च को खत्म हो रहा है, प्लस 7 days, तो 22nd मार्च तक उसका मार्च का रिटर्न भी फाइल कर देगा. क्लियर? और इसका रिटर्न सिंपल होगा. आउटपुट एंड इनपुट डिटेल्स. कैन एनआरटीपी क्लेम इनपुट? यस, ही कैन क्लेम इनपुट ओनली ऑन गुड्स विच इज इंपोर्टिंग. तो डोमेस्टिक परचेज करेगा, उसका क्रेडिट नहीं ले सकता है. इसका रिटर्न विल बी इन GSTR 5, एंड ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी एनुअल रिटर्न, बिकॉज वो रहेगा ही नहीं एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए. आएगा, बिजनेस करेगा, टैक्स पे करेगा, चला जाएगा. एंड हिज वैलिडिटी इज जनरली maximum 90 plus 90 days. Clear? Okay. Next is TDS returns. This we know that where the value is more than 2,50,000, हमने last class में पढ़ेगा. You have to file GSTR1. Date of filing is 10th. It shall be deducted electronically, cash ledger, things. Will it appear in GSTR 2A or 3B? CTP file GSTR 3B. Yes, casual taxable person CTP, he will file GSTR 3B. Because he's in India only, no? That's why for NRTP is outside India. So for him, that 13th and 7th is there. For casual taxable person, normal due date will be. Fine. Now this is the question, whether TDS credit will appear in GSTR 2A or 2B.
GSTR 2B, GSTR 2A. Oh my God, क्या सिखाया मैंने? When we discussed under TDS provisions, all you were there, and you definitely answered this, and I've repeated this so many times, right? Others have given the correct answer that yes, it will neither appear in your GSTR 2A nor in 2B, because 2A और 2B में क्या रिफ्लेक्ट होता है? क्रेडिट रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन ये तो टीडीएस है। टीडीएस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा, नॉट इन योर 2A एंड 2B। 2A एंड 2B में क्रेडिट रिफ्लेक्ट होता है, टीडीएस और टीसीएस की इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होता है। फाइन। देन रिटर्न फॉर टीसीएस, जैसे टीडीएस का जीएसटीआर 7 है, वैसे टीसीएस का जीएसटीआर 8 है। ओके, जीएसटीआर 8 ई कॉमर्स जो करेगा सेम 10th तक, इट इज अवेलेबल इन द कैश लेजर, एवरीथिंग एल्स इज सेम। Due date of payment of taxes. So whatever GSTR 3B, 5 and 7 we are filing, the return due date itself is the payment due date. ओके, सो रिटर्न का ड्यू डेट है वही पेमेंट का ड्यू डेट है। जो भी आप पेमेंट का अलग ड्यू डेट नहीं है, रिटर्न्स फाइलिंग के पहले आपको पेमेंट करना है। विदाउट पेमेंट यू कैन नॉट फाइल योर रिटर्न्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट अंडर जीएसटी, आपको पेमेंट करना पड़ेगा तभी आपके रिटर्न्स फाइल कर सकते हो। QRMP, okay, this is a little complicated, we'll come to that later on. सो वेयर अप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, ओके। क्यूआरएमपी जो है, आपको पेमेंट कब करना पड़ेगा? आपका दो ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए। सो मेथड वन इज फिक्स सम मेथड, कि आपके जो भी लायबिलिटी है वो फिक्स सम हो जाएगा, जो 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश इन द रिटर्न फॉर द प्रिसीडिंग क्वार्टर। तो क्या करेंगे, क्यूआरएमपी वालों को भी पेमेंट में दिक्कत न हो, इसीलिए एक स्कीम लाया गया है कि that scheme is saying that 35% of the tax paid, okay, of whatever previous month का आपने कैश में पे कर दिया है, that will be payable for where you have furnished the return। तो फिर 35% का आपका क्वार्टरली रिटर्न जो प्रीवियस मंथ है उसका 35% हो जाएगा। या फिर आपने अगर मंथली फाइल किया है तो फिर लास्ट मंथ का 1 मंथ का पेमेंट जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज पेमेंट, और वो अमाउंट आपको PMT 06 में पे करना है। तो आप QRMP जब रिटर्न्स फाइल करोगे, ठीक है, मंथली पेमेंट के लिए जाओगे, तब आपको ऑप्शन पूछा जाएगा वेदर यू वांट टू गो फॉर फिक्स सम और द सेकेंड ऑप्शन। अगर आप फिक्स सम करते हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर 35% ऑफ द टैक्स पेड, अगर आपने क्वार्टरली पे किया पिछले महीने में, पिछले क्वार्टर में। एंड अगर आपने प्रीवियस क्वार्टर में क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया, मंथली फाइल किया, तो फिर लास्ट मंथ में जो आपने कैश पेमेंट किया है वो अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा इन द फिक्स सम मेथड। सेकेंड मेथड इज सेल्फ असेसमेंट, कि आपको प्रीवियस मंथ में आपने ज्यादा पे कर दिया होगा। हाउ कैन यू कंसिडर दिस? सो यू कैन ऑप्ट फॉर सेल्फ असेसमेंट मेथड, वेर इन यू कैन पे द टैक्स बाय कंसिडरिंग व्हाट इज योर टैक्स लायबिलिटी ऑन योर इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज एंड ITC अवेलेबल, and then pay it in PMT 06. So you will do the calculation and pay it. So there are two methods under the QRMP. Can change it afterwards. For one quarter, it will be fixed. For next quarter, you can change it. So in one quarter, you will pay 1 month self-assessment, 1 month automatic. That is not possible. For 1 month, whatever you opt, for one quarter, you have to completely use it. Next quarter, you can change it. फिक्स सम में कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया?
35% वाला ओके। अगर आपने प्रीवियस क्वार्टर फाइल किया है तो फिर मुझे तो वन थर्ड ही चाहिए। क्वार्टर का वन थर्ड 33% होता है, करेक्ट। 1/3 इज इक्वल टू 33%। तो उसका क्लोजेस्ट राउंड ऑफ करके 35% बता गया है कि आपका लास्ट क्वार्टर का आपने पेमेंट किया है, उस क्वार्टर का 35% में कंसिडर करूंगा कि इस महीने का लायबिलिटी है। तो फर्स्ट मंथ 35%, सेकेंड मंथ 35% और थर्ड मंथ जो है आप एक्चुअल कैलकुलेशन कर लोगे। For every quarter, it lasts for choosing of method or only at the time of adoption. Every month you can change it, and first time when you opt, it will ask. Then every month it will by default ask you which method you want it. This is only relevant for QRMP payment, correct. For others, so no problem. This is only for QRMP. It lasts for every quarter. Yes, not every month. It lasts for every quarter only. Okay. So, and definitely interest will be on that. Then next is the returns. Now, once you register, first return what you file, that is called the first return. Like if you're liable for registration on May 1st, you have applied for the registration within 30 days, right? May 1st is your liability when it's crossing the threshold limit. You have applied within 30 days, no problem. Actual receipt of registration is on June 15th. Then when will be your first return? For this July 15th, you will file the first return on July 20. And from this period to this period will be your supplies, because your liability for registration on May, you have applied also on time and you have received the registration late because officer has delayed it for verification and other things. So for this period details, you will file it in the first return. And at this point of time, you did not have the GST registration number. So this is where the concept of revised invoice comes in. So only in this situation, you can revise your invoice, because I mean, revising of invoice, आप values change नहीं कर सकते हो. Earlier, your GST number was not there. Now you can mention your GSTI number. Correct. First return monthly है इसलिए 20th. Fine. इसके बाद next है annual return. Who should file an annual return? All persons except the following, except the casual taxable person, non-resident taxable person, ISD. So CTP का returns 3B है, लेकिन annual returns उसको नहीं फाइल करना है. So that category is different and this category is different. Okay. This category who is not required to file the annual return is CTP, NRTP, ISD, PCS and TDS and OIDR. They are not required to file it. Others who are required to file, they have to file it by the 31st of December. The forms are GSTR 9, and for a composition taxpayer, it is 9A. Okay. For a normal taxpayer 9 and for a composition taxpayer 9A. What are the documents? If his aggregate turnover crosses 5 crores, then he has to file a additional self-certified reconciliation statement in GSTR 9C. Okay. 9 सबको file करना है. 9C whose turnover is crossing 5 crores, they will have to file 9C. And this 9C will be self-certified reconciliation statement. Earlier, it was certified by a chartered accountant. Abhi change ho gaya and it is self-certified itself. And what will be in this reconciliation? This will be a reconciliation between audited financial statements and value what is declared in your GSTR 9. So 9C जो है 9 में आपने वैल्यूज जो डिक्लेयर किए हैं
वो वैल्यूज लेके फाइनेंशियल्स में जो भी डिफरेंसेस है उसका रिकंसिलिएशन 9C में रहे. Then next is final return. A registered person whose registration is cancelled or surrendered within 3 months of the date of cancellation or the date of order of cancellation, whichever is later, उसे return file करना पड़ेगा in GSTR 10. What with GSTR 9C and GSTR 9 also? And UIN holders जो है GSTR 11 फाइल करेंगे. और उसमें क्या रहेगा, सिर्फ इनवर्ट परचेजेस, क्योंकि वो कुछ सप्लाई करते ही नहीं है. तो जो भी परचेजेस वो करते हैं उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं. जो भी GSTR 11 है वो ऑटो पॉपुलेटेड है, उसका वो क्रेडिट क्लेम करके रिफंड फाइल कर सकते हैं. Explain GSTR 9C. Okay, 9C is a reconciliation between the books which is there in terms of financial statements. So this is a reconciliation between the financial statements and the annual returns in GSTR 9. तो सभी रिटर्न्स में कॉमन पॉइंट्स क्या है कि आपको पुराने मंथ के रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, तभी आप इस मंथ के रिटर्न फाइल कर सकते हो. दैट इज दिस पॉइंट. सेकेंड, दिस फर्स्ट पॉइंट इज वैलिड रिटर्न. जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उसको आप जो भी लायबिलिटी दिखा रहे हो उसको आप पे करोगे तभी वो वैलिड रिटर्न होगा, वरना इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ वैलिड रिटर्न. नेक्स्ट इज रिटर्न नीड टू बी इलेक्ट्रॉनिकली साइंड. आपको मैन्युअली साइन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज रिटर्न्स आर व्हाट, दीज रिटर्न्स आर ऑल फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली. तो फिर आपको सिग्नेचर भी ऑनलाइन होगा. DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, एक टोकन की तरह आता है, पेन ड्राइव की तरह आता है, उसे DSC कहते हैं. सो इफ यू आर कंपनी और LLP, आपको DSC कंपलसरी है. अगर आप इंडिविजुअल हो तो फिर इलेक्ट्रॉनिक साइन, विच मीन्स आधार पेस्ट OTP या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, एनीथिंग इज फाइन. So why particularly 35% fixed sum method? Because one third, no, a quarter means 3 months. How much if I pay 100 in the previous quarter? Now I have to decide what is the tax payable this month. Now I don't have monthly breakup for the last quarter because last quarter I have filed quarterly returns. Now this month if I have to pay and the government wants to have an estimation, what will be the estimation? Previous quarter's turnover itself. Now from previous year's quarter's turnover, can the government say pay full 100% the first month? That will not be correct, right? So they've said, okay, one third of it, which is 33.33%. So they've rounded it off to 35%. Say first month 35%, second month 35%. If your sales is same, like last year 70% you have paid in the first and second month, balance 30% you'll pay. If the sales has gone down, then it will get adjusted accordingly. Got it? DSC can be by individual also, yes. But for company and LLP, LLP it is compulsory. For others, they have option, they can use it, yes. If you have multiple registration, each registration file a return. All returns filed online itself. Annual returns are based on financial statements, and annual returns will not be for consolidated. Of again, like how each registration you file a return. So each registration you will file a separate annual return for each registration. Common returns for all the acts, no separate returns. There's no revision of returns except GSTR 1, which is through GSTR 1A. Nil returns are mandatory to file in case of no transactions, and non-filing of returns leads to assessment of tax, penalties, and even cancellation, where a composition taxpayer 3 months beyond the due date, regular taxpayer beyond 6 months, QRMP,
beyond 2 months quarter. So this is interlinking of the cancellation registration chapter with returns chapter. In registration chapter, we have understood when the officer can cancel it. These are the cases when a composition dealer doesn't file even 3 months beyond the due date. A regular taxpayer doesn't file for a regular continuous period of 6 months, and a QRMP person doesn't file for 2 tax periods. Late filing is allowed, that you're not able to file within due days, you file late, but late fees and interest will apply. Okay, then delay in filing returns. If there is a delay, then you have to pay late filing fees. Late filing fees of all these GSTR 1, 3B, and 10, then it is 100 rupees per day or 5,000 rupees. For annual return, it is 100 per day or 0.25%. But it has got reduced through a notification. So through this notification, they are saying that if you file a delayed return, then it will be 500 rupees or 20 rupees, whichever is lower, or where you're based on the turnover, these values increase. So you have to just remember this, nothing to explain here. If at the last month we get to know that our liability is less than we have already paid for the last 2 months, then you can claim the refund. Second tax period is second quarter in case of QRMP. Second tax period is the second month in case of QRMP. Okay, if there is no turnover, that is, if there is a nil turnover, then it is 20 rupees or 500 rupees, whichever is higher. If it is less than 1.5 crores, then 50 rupees or 2,000, whichever is higher. More than 5 crores, more than 1.5, below 5 crores, then 5,000 or 50 rupees. Above 5 crores, 10,000 rupees or 50 rupees per day. Two tax periods are 2 quarters for QRMP in case of cancellation. Correct. 2 tax period are, because their returns is quarterly, so it is 2 quarters. You're right. And where you have filed, this is for GSTR 1 and 3B, this is for GSTR 4. Okay, for GSTR 4, these are the late filing fees which is payable, and this is for delay in annual returns. Annual returns 50 rupees per day are 0.5%, 0.4%. And if your turnover is more than 5 crores, 100 rupees are 0.4%, or 200 rupees are 0.5%. So it depends on your turnover, the quantum of late fees will be applicable. GST practitioners, this is a very good area, that if you are a GST person and you want to become a GST practitioner, or a non-CA also can become a GST practitioner. These are the conditions, that he should be definitely an Indian citizen. Foreigner cannot be a GST practitioner. You should be of sound mind and solvent, and not convicted for an offense. मतलब आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं रेज करना चाहिए पुलिस स्टेशन में, wherein imprisonment हो गया more than 2 years. आपके पास कंप्लेंट रेज कर दिया गया, लेकिन आप कन्विक्टेड नहीं हो. कन्विक्टेड जब हो गए, तब आपके खिलाफ कंफर्म हो गया कि हाँ, आपने गलत काम किया है. ठीक है, अगर आपने गलत काम नहीं किया है, कोर्ट साबित कर देता है, कोर्ट में चल रहा है अभी केस, देन यू आर नॉट अ कन्विक्टेड स्टिल. Okay, but if you are convicted and in prison more than 2 years, then you cannot become a GST practitioner. Who can become a GST practitioner? Any person who is having a graduate or PG degree, retired state commercial tax officer or CBEC officer, or any degree plus passed final exam of ICAI, ICSR, or ICWAI. The third ICAI is a cost accountant. So this is the criteria. What all can he do? And application, we have to file it. Application file करने के बाद वो approve होगा, and then you will get enrolled as a QRMP practitioner. What all functions you can do? You can furnish the details of outward and inward supplies. You can furnish monthly, annual, and final return. You can make deposit, furnish information. ये सब कर सकते हो आप once you are a GST practitioner. But इन दो चीजों के लिए, फाइल अ क्लेम ऑफ रिफंड एंड फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, इन दोनों पे रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो कंफर्मेशन देगा. बाकी सब के लिए कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन रिफंड फाइल करने के लिए और एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए
कंफर्मेशन चाहिए टैक्स पेयर का. Can one CA not BCom or any degree mandatory? Yes. BCom or degree is not mandatory. Only CA is sufficient. If case is going on still, can you become a GST practitioner? Yes, you can. QRMP can also adjust in next GSTR-3B instead of getting refund. Yes, that also you can. Are you a GST practitioner? Yes, I have enrolled as a GST practitioner and I've got a certificate also. Fine. So good. We have completed the chapter. We will go through the MCQs. Before that, any questions? Yes, I do have a BCom degree and a CA degree. How a MCom student can become GST practitioner? Through writing an exam. So CAs, they don't have to write exam. BCom and GST, other than the who are qualified or non-professionals, they can write an exam and become a GST practitioner. So as we had seen here, Karthik, there is the mention here. No person enrolled as a GST practitioner is eligible to remain enrolled unless he passes such examination which is conducted by at such periods by NASIN. So NASIN is a National Narcotics and Customs Institute. So they conduct some exam. You have to pass that exam, then you can get it. So just log into the NASIN's website, you will get to know about it. So if someone have only CA degree but not BCom or any degree, then can they? Yes, he can. जनरली रिटर्न्स चैप्टर्स में थ्योरी ही आती है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ ये मिक्स हो सकता है कि से कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी एंड मेंशन द डेट्स व्हेन ही हैज टू फाइल द रिटर्न्स. तो ऐसे क्लब हो सकता है, इंडिविजुअल चैप्टर का आना मुश्किल. Right. First, A is the correct answer, and second, 2B. Correct. Everybody is almost given the correct answer. Next. थर्ड वन वेरी क्लियर कि जो भी सप्लायर सप्लाई करता है that will appear in your GSTR-2A. Correct? And every registered taxable person shall be entitled to take credit of input tax in his return, and such input tax credit shall be credited to his cash ledger, credit ledger. जो भी क्रेडिट लेता है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आता है.
right? All the above are correct itself. Correct? All the sentences are correct. Perfect. 51, 52. 51, 52 is TCS and 52 is TDS. तो आपको 51, 52 याद करना पड़ेगा, जैसे हमने बताया था कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस यू हैव टू रिमेंबर, लाइक दिस 51, 52 इज इन दैट लिस्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर द सेक्शंस. Yes, sixth MCQ. B and C. There's a quarrel between B and C. The correct answer is C, because just this is data entry. Just by data entry, it will not reflect in your 2A. They have to file it. So after the due date, just data entry is not sufficient. After the due date is when you can see the GSTR 2A. Right. A registered taxable person shall file his returns through GSTR 3B. B. It is D. Correct. Form GSTR 4 by the 30th June succeeding the year. 8 में GSTR 4 होगा ना? हाँ, करेक्ट, GSTR 4 ही होगा. Hello, sir. Yes. सर माय क्वेश्चन इज जो 3 क्वार्टर वाला जो क्वेश्चन था जिसमें हम काउंट कर रहे थे कि लास्ट तो बिफोर देखना पड़ता है कि मतलब आफ्टर देखना पड़ता है, ये कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए. क्वेश्चन समझ में नहीं आया. सर जैसे अभी जनवरी टू मार्च वाला हम देख रहे थे तो उसमें नवंबर टू 31 दिसंबर हुआ, जनवरी हुआ था, तो वो क्वेश्चन मेरे समझ में आया. तो QRMP फाइल कंपोजिशन. करने वाले हैं वो कब? कॉम्पोजिशन जी कॉम्पोजिशन नहीं, वो QRMP वाले हैं. ठीक है, हाँ सर, QRMP है ना, QRMP. उनको ऑप्ट इन करना पड़ता है. वो कब सेलेक्ट कर सकते हैं? वो डेट्स का रेंज हमने दिया था, उस डेट के रेंज के अंदर वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे.
तो सर ये चीजें कैसे मतलब क्लियर होगा कि हम उस चीज को चूज करेंगे कि इसी मंथ और इसी मंथ के बीच में होगा ये? करेक्ट, मंथ एंड तक आपको टाइम मिलेगा कि चूज करने के लिए कौन सा चूज करना चाहते हो। ओके सर, थैंक यू सर। Yeah, state which is the true statement. Very tricky last question here. Yes, answer is C, because both A and B are true statements. Okay, so that was the end of the session and end of uh, my classes with the inter. So I truly enjoyed your questions and a lot of learnings from your questions, and wherever there were corrections, I could correct it and kind of respond. So I just enjoyed that you were interacting more in the classes. So keep continuing this and continue your journey towards the CA course. Hello, am I audible? Am I audible? Okay. Yes, yes. Yeah. Good evening, students. So today was the last session for intermediate September 2025 examination, goods and services tax. Hope you have simultaneously gone through all the chapters, and all the concepts are also clear to you. Deepak sir has taken a lot of problem solving questions, to revise the concepts, significant concepts. He has taken a lot of MCQs also with you, so that your concepts get strengthened. And we from Board of Studies also, we have taken a lot of GST Titan quiz with you, so that significant tricky issues, they get clarified. So I hope that all the provisions are by now, once at least you have gone through the all the chapters. So at least one round of preparation has been completed by today. So now, going forward for the examination, September 2025 examination, I just would like to reiterate few things that please go through the study material, along with the statutory updates, which are already web hosted on the institute's website. Study statutory updates, it contains significant amendments made by notification and circulars up to 28th of Feb 2025. And along with that, you may also go through the revision test paper, RTP. See, some student Yash Podar is asking the BOS portal, new study material for GST is not present. See, friend, for September 2025 examination, the study material applicable for May examination is the same. It is the same which is relevant for you. So May 25, September 25, and January 26. Same October 2024 edition of study material is applicable for May 25, was applicable for May 25, it has already been passed. September 25 and January 26 examination. October 2024 edition of study material is applicable for you. And for students who are going to appear in September 2025 examination, they have to go through the study material along with the statutory updates.
And we have also hosted Saransh for intermediate paper. We have also come out with Saransh, which contains the the summary of all the key concepts of all the chapters of intermediate paper 3B GST. So before examination day, you can go through the Saransh also. And further revision test paper has also been web hosted. So all the students, whose first round of preparation is already complete, so you may go through the revision test paper, and because all the new questions based on amendments which we try to include in the revision test paper. And before examination, please go again to the statutory updates, because all the amendments have already been taken up in this class along with the relevant chapter. And problems, test your knowledge questions, question and answers, MCQs questions have also been thoroughly covered in this session. And GST Titan quiz also we took for almost all the substantive provisions of GST law, and we hope that it was helpful for you. Mr. Yash Podar is asking in the BOS portal. See, Priyanshi, it was by mistake that today is the last class for intermediate paper 3B, and all the question and answers you must have noticed that sir has taken all the question and answers simultaneously in each session for all the topics, right? So schedule has been rectified, and give some guidelines. Soumya is asking, give some guidelines for revision. So, I mean, that's what I am discussing with you. Your first round of preparation is already complete. So, before examination, you again have to go through the study material along with the statutory updates. Revision test paper for intermediate paper 3B is already web hosted. You may go through it. And preparation strategies, examination related concerns that will, we cater in the success at CA examination. And success at CA examination is held twice, before examination and before the. In each session of success at CA examination, we take in length how to prepare for examination, how to write your answers, the time bound manner, how to score good marks. So you may attend that, and I think the schedule is already posted when you open the BOS knowledge portal. Calendar is there. Chauhan is saying PPT of some chapter. Okay, we will recheck that the PPTs of all the chapters they will be uploaded. And so today is the last class, Mr. Chauhan. Priyanshi ma'am, our revision classes from 8 July, timing will clash with our live classes till 20th July. I will give workbooks in September 25. How will I cover? I didn't get your point, Priyanshi. Which revision classes you are talking about from 8th July? And timings will clash with our live classes till 20th July. Please, you may elaborate your query in detail so that we can convey it to the concerned person. So, study material for GST, I have already told you it is same for May. It was same for May 25, September 25, and January 6. Ma'am, there is no. See, today is the last class, Soumya. Schedule has been updated, and all the question and answers, along with the amendments, have already been covered in each chapter by Sir Mr. C.B. Kajan. Right? So you may also refer, if any of your chapter has been missed out, you may go through the same. It is hosted on the YouTube. So you may go through the same. Right? So if any chapter or any topic has been missed out, you may go through the same or from the YouTube, and you may go through the revision test paper that has been hosted on the website. Along with success at CA examination classes will 2 sessions will commence soon, and you may go through it for the preparation examination related strategies. Revision class कब से होगा मैम? Revision classes for these are the these classes are for September 25. So which revision classes you are asking? Uh, right? Then okay, Soumya, thank you. Any other concern?
Good Revision evening, ma'am. classes are starting from 8th July. Okay. Ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Ma'am, revision classes will be there for September students from 8th July. About that I was Yes. talking. Yeah. Revision classes are starting from 8th July for September 25 examination, and schedule shall be posted soon. Okay. Ma'am, schedule was already uploaded, so that is why I was confused that the timing will be Okay. same. Okay. Yeah. Actually, you are saying that timing will be the same. Yes, ma'am. And our live That classes will end by 20th of July. So till 20th of July, we will face the difficulty that what should we attend. and okay, you have raised your concern. We shall discuss it with the concerned person. Okay. Yes, ma'am. Thank you. Okay, so wishing you all the best, and you have a lot of time for September 25 examination. We hope at least all the students who have attended these classes, very attentively and regularly. We wish you, wish you good luck, and we hope that at least all of you will get distinction in GST, basically because the GST Titan quiz we at Board of Studies and see Deepak Jain has also put in a lot of efforts for you people. So we hope at least we are, expecting at least distinction in this paper for GST. And wishing you good luck for your examination. Right? Okay. Thank you. Thank you, Soumya. It was a great journey with for same here. We too feel a good journey with you people. Thank you, Astha. And yes, you may share your feedback regarding, which what all session regarding your entire journey. You can share your feedback for intermediate paper 3B. This is the last day when I'm asking you to share the feedback in the feedback form because today is the last class. And you may share your feedback for the GST Titan quiz, which we in-house faculties have taken for you, along with for our faculty, C. Deepak Jain. He has also taken a lot of MCQs, lot of question and answers with you. He has been associated with us since a very long time. Okay, please share your feedback in the feedback form. Yes, Priyanshi, you may ask your queries if you have any at idt-enter@ICAI.in. Okay, thank you, students. Thank you. Yes, Ashokji, session is over. You may end up the session. Thank you, students. Thank you.